Hello students, Standard 8, Subject Mathematics. We start exercise 3.4, question number 1. State whether true or false. Number A. All rectangles are squares. सारे rectangle square है. This is false because all square are rectangle. सारे square rectangle हो सकते हैं but all rectangle are not squares. So all rectangles are square. This is false. Number B. All rhombuses are parallelogram. सारे rhombus parallelogram है. So this is true because opposite sides of a rhombus are equal and parallel to each other. So therefore all rhombuses are parallelogram. इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट नंबर सी. ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. सारे स्क्वायर rhombus भी है एंड रेक्टेंगल भी है. सो ये तो रेक्टेंगल तो है ही जो हमने अभी देखा है. That rectangles are square is false but squares are rectangle is true. So ये तो होगा ही. But all squares are rhombus also. So yes, all squares are rhombus as all sides of a square are of equal length. And all squares are also rectangles as each internal angle measures 90 degree. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे मैंने ओनली टी लिखा ही, आपको समझना है कि टी मीन्स ट्रू. नंबर डी. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर ई. ऑल काइट्स आर rhombuses. This is also false because a kite does not have all sides of the same length. Rhombus में all sides are same length but in kites does not have all sides of the same length. So this statement is false. Here we write only F. ये आपको समझना है, आपको only F नहीं लिखना, आपको पूरा false ऐसे लिखना है. Number F. All rhombuses are kites. सारे rhombus kites है. This statement is true because a rhombus also has two distinct consecutive pairs of sides of equal length. So all rhombuses are kites. This statement is true. Number G is all parallelograms are trapeziums. True. All parallelograms have a pair of parallel sides. जो ये प्रॉपर्टी ट्रापेजियम की भी है. So all parallelograms have a pair of parallel sides, जो कि ट्रापेजियम में भी होता है. So this statement is true. H. All squares are trapeziums. This is also true. All squares are trapeziums because all squares have a pair of parallel sides, जो कि trapezium की भी प्रॉपर्टी है, pair of parallel sides. So therefore this statement is true. Now question number 2. Identify all the quadrilaterals that have number A. आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे quadrilaterals that have four sides of equal length. कौन से quadrilateral की four sides equal length की होती है? So there are rhombus and square have four sides of equal length. Number B. Four right angles. कौन किस में फोर राइट एंगल्स होते हैं? तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव फोर राइट एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. नंबर 1. अ क्वाड्रिलेटरल. कैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है? सो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज फोर साइड्स. स्क्वायर हैज फोर साइड्स, so therefore it is quadrilateral. Number 2.
How a square is parallelogram? So a square is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other. नेम पर से ही लिखना है parallelogram, parallel. A square is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other. Number 3, a rhombus. How a square is a rhombus? So rhombus की property क्या होती है? 4 sides of the same length. So a square is a rhombus since its 4 sides are of the same length. Parallelogram में opposite sides parallel होती है, therefore it is square. And rhombus में same sides की लेंथ सेम होती है, sides are of the same length. So square is a rhombus since its 4 sides are of the same length. ये एक्सरसाइज थोड़ी थियोरिटिकल है, सो आपको थोड़ा बहुत लर्न भी करना होगा. Question number 4. Name the quadrilateral whose diagonals number 1 bisect each other. ऐसे कोई quadrilateral का नेम लिखना है whose diagonals. नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं. Number 1 whose diagonals bisect each other. So the diagonals of a parallelogram, rhombus, square and rectangle bisect each other. इन तीनों के diagonals bisect each other, rhombus, square and rectangle. Number 2 are perpendicular bisectors of each other. So the diagonals of a rhombus and square act as perpendicular bisectors. Number 3 are equal. Name the quadrilateral whose diagonals are equal. So ऐसा कौन सा quadrilateral है whose diagonals are equal? So the diagonals of a rectangle and square are equal. Rectangle and square दोनों के diagonal equal होते हैं. Question number 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Why a rectangle is a convex quadrilateral? Why not concave? Why it only convex? So in a rectangle, sorry, here C also. So in a rectangle there are 2 diagonals. We know that in a rectangle there are 2 diagonals, both lying in the interior of the rectangle. रेक्टेंगल हैज़ 2 डायगोनल एंड वो दोनों डायगोनल कहाँ पे होते हैं? इंटीरियर, रेक्टेंगल के इंटीरियर पार्ट में, एक्सटीरियर पार्ट में नहीं होते. डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में होते हैं. सो बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, सो हैंस इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. रीजन इज in a rectangle there are 2 diagonals both lying in the interior of the rectangle, hence it is a convex quadrilateral. So ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 3.4 ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है. एंड नाउ वी फिनिश आवर चैप्टर नंबर 3. इन आवर नेक्स्ट वीडियो we start new chapter.